Hello everyone and welcome back to our channel. Firstly, I'm very sorry for being inactive lately. Things were not going okay. But now I'm back and today I'm excited to share with you all that how I deal with distractions as a student. Maximum number of students struggle with this. So let's get into it and find a solution. I only do 3 things which I will share with you all now and I think it's enough. So the first thing I do is I keep myself extremely busy or engaged with something so that I can get rid of unnecessary thoughts. Because हम सब जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, right? And इतना करने से आपके maximum distractions खत्म हो जाएंगे. I'm telling you for sure. Just keep yourself busy. Second thing is I mind my own business and hence I don't get socially exhausted or find myself trapped in unwanted shit. Please don't poke your nose in others' life. कौन क्या कर रहा है, किसका किसके साथ क्या चल रहा है, कौन कहाँ पे गया है, ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखो बिकॉज यही से आपके मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस आते हैं. ना चाहते हुए भी वंस यू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलती रहती है कहीं ना कहीं एंड देन यू मूव आउट ऑफ द ट्रैक. हो गया डिस्ट्रैक्शन. एंड दूसरी चीज़ प्लीज़ कीप नंबर ऑफ फ्रेंड्स लिमिटेड. मैं हर एक वीडियो में बार बार इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ क्योंकि यहाँ से ही मैक्सिमम चीज़ें शुरू होती है. आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं. जितने कम फ्रेंड्स होंगे ना उतना आपको सोशल एग्जॉशन कम होगा एंड यू विल स्टे मोर फोकस्ड, जो कि हमारा टारगेट है. थर्ड थिंग इज योगा, मेडिटेशन एंड प्रेयर्स. Now you will say कि आपको योगा नहीं आता, but not an issue. Wake up early in the morning, do some basic warm-up exercise, and then do 12 Surya Namaskars. You can also do more if you want, and then practice few basic asanas like Tadasan, Vrikshasan, Trikonasana, Veerbhadrasana, Patangasana, etc. These asanas are very powerful. They boost concentration, guys. Very important. Hold these asanas for 1 minute or more, as per your wish, and just see the magic. Trust me guys, by simply including yoga, a little bit of exercise, running, jogging, or simply walking will do wonders. I'm not kidding. Then you do meditation. Sit quietly, close your eyes and try to focus in the middle of your eyes here. Then slowly increase the time and eventually you will learn कि ध्यान कैसे लगाना है. बहुत टाइम लगता है हाँ ये सब चीज़ों के लिए, बट आप स्टार्ट करो. इनिशियली इट विल बी डिफ़िकल्ट बट धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा. एंड लास्टली प्लीज़ प्रे टू गॉड एटलीस्ट फॉर 5 minutes a day. अगर आप ज़्यादा करोगे तो इसको कुछ हार्म नहीं है. ऑलवेज थैंक गॉड फॉर वट एवर यू हैव एंड आस्क गॉड टू गाइड. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, some distractions will always be there but you don't have to flow in anything. Make sure कि किसी चीज़ में आप पूरी तरह से flow नहीं हो रहे हो. Self control is crucial. Thank you so much guys for tuning in. I hope that these tips on managing distractions will help you as much as they have helped me. And remember that it's all about finding what works for you and staying consistent. So if you enjoyed this video then do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. So yeah, bye, see you soon in the next one. Thank you.